Hello everyone, it is the 14th today. We are here to do the final actual paper discussion for Foundation December 25. So without any further delay, I'm very quickly going to give you a solved solution of what the finals paper should look like. And then I will let you be the judge of how many marks you've gotten, how many correct, how many wrong. And then we will obviously wait for the रिजल्ट एक मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन मैंने बोला था रेशियो से तीन ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं मीन प्रोपोर्शनल स्क्वायरिंग क्यूबिंग विच इज योर डुप्लीकेटिंग ट्रिप्लीकेटिंग विच इज टाइप्स ऑफ रेशियोज और एक तीसरा है वर्ड प्रॉब्लम द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6 टू बी वेरी ऑनेस्ट ये और थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते थे बिकॉज ये ग्राम्स में दिया है ये ग्राम्स में दिया है और पूछा भी ग्राम्स में ही है सो देर इज इंट मच रॉकेट साइंस बट अगर दो चीजें ग्राम्स में देते पर ये किलोग्राम्स में पूछते या फिर 1 किलोग्राम में देते 1 ग्राम में देते और तीसरा किलोग्राम में पूछते तो वो हल्का सा इंटरेस्टिंग हो जाता है विथ ओनली एंड ओनली ग्राम्स देर इज इट्स जस्ट अ स्ट्रेट आंसर देर इज नथिंग टू इट मैं मेरा भी कैलकुलेटर शेयर कर लेता हूँ ताकि जब जब मैं कैलकुलेशंस करूँ आप वो भी देख पाओ when three terms are in proportion, they are in continued proportion or continuous proportion. So the square of the middle term is the product of the first and the last. So x square is 1.4 into 5.6. So x square is 1.4 into 5.6, which becomes 7.84. So x is the positive or the negative square root of 7.84. So अगर मैं इसका रूट ले लूं, the answer works out to be 2.8. So it's either positive or negative 2.8. But ये the one reason why they could have written it as grams is we will say ये weight है, ये negative नहीं हो सकता. So the mean proportional has to be a positive 2.8 grams. So the answer to this is going to be B 2.8 grams. That is your first question, which is sorry 2.8 grams. Question number one, the answer is going to be a 2.8 grams. Question number two, there is ninth term of the AP. तो ये भी बता दिया कि AP है, ये भी पूछ लिया कि ninth term है. Again, ninth ही term मांगा है and AP ही है. तो to be very honest, logic लगा के आप ninth term find कर ही सकते थे. So if you go -2, -5, -8 and -11, अगर आप देखो तो -3 से चेंज होते जा रहा है प्रोग्रेशन या 3 से घटते जा रहा है इज व्हाट यू कैन से. तो इसके आगे अगर 3 से घटते जाता है तो ये 14, ये 17, ये 20, ये 23 और ये 26 ऑल नेगेटिव्स. सो द आंसर टू दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव 26. या फिर आप सॉल्व भी कर सकते थे. ए हियर इज -2. द कॉमन डिफरेंस इज कोई भी दो टर्म्स का difference, which is -5 minus of -2, so the difference is -5 plus 2, so the difference is -3. You want me to find the ninth term. I will say Tn is a plus n minus 1 into d. The ninth term is a, which is -2 plus n minus 1, which is 9 minus 1 into d, which is -3, which is -2 plus 8 into -3, which is -2 plus 8 3s is 24, but negative आएगा. So the answer is a negative 26. That's your question number 2. Question number 3. The first term and the common ratio of a GP are 4.5. First term and common ratio. तो first term A दे दिया आपको 4 and common ratio R दे दिया है half. half को 0.5 भी लिख सकते हो. उनको fifth term चाहिए. अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट फिफ्थ टर्म आप खुद भी निकाल सकते हो. इट्स नॉट एग्जैक्टली रॉकेट साइंस. बस देख लेना उनको कैसे चाहिए. तो दे वांट इट इन अ फ्रैक्शन फॉर्मेट. तो फ्रैक्शन में ही रख देना 4. अब अगर मैं आगे चला जाऊं, 4 का आधा 2 है, 2 का आधा 1 है, 1 का आधा आधा है और आधे का आधा क्वार्टर है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 1/4. सो द आंसर शुड बी बी 1/4. या फिर यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस. They want the fifth term, so n is equal to 5. I'm going to say Tn of a GP is AR raised to n minus 1. So the fifth term of a GP is A, which is 4,
r which is half raised to n minus 1 which is 4, which is 4 into 1 का fourth power is 1, 2 का fourth power is 2, 4, 8, 16, 16 हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, 4 1s are 4 4s are, the answer is going to be 1 upon 4. So either way, the third term is 1 by 4. Moving on to find the sum of 10 terms of the series. 10 टर्म है और सीरीज बोला है, तो एपी है जीपी है पता नहीं है. तो इफ यू लुक एट द प्रोग्रेशन, इट इज 2, 4, 6, 8 एंड 10. एपी के लिए 6 + 2 4, 6 + 2 8 डिवाइड बाई 2 4, परफेक्ट. तो ये एपी है. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, 10 टर्म्स का सम निकालने बोला है, ऐसे ही ऐड कर दोगे तो भी आ जाता, क्योंकि आपको उन्होंने पहली 5 टर्म्स तो दे ही दिए, 1 2 3 4 5, बस और 6 7 8 9 और 10 बचा, 2 2 से बढ़ते जा रहा है, तो ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 18 और ये 20 है. तो इफ यू ऐड दिस इज गोइंग टू बी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 and +20 adds up to 110, क्योंकि 10 ही टर्म्स है. और do it, a here is 2, the common difference here is 2, and you want me to add this up till 10 terms. So Sn for an AP is a n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So the sum of 10 terms is 10 by 2, 2 into 2 plus 10 minus 1, which is 9, into d, which is also 2. That's 5 into 4 plus 18. Sum of the 10 terms is 5 into 18, 19, 20, 21, 22, and 22 into 5 we know is 110. So the answer to that is going to be A, 110. Question number 5. A sum of money doubled in 5 years. The simple interest is, you can do this in 2 ways. You can actually do this. एक principal था, वो double हो गया in a period of 5 years. Rate पता नहीं है. So just use the amount formula. Amount is principal into 1 plus n I. In the next step, amount क्या हुआ है? Double the principal हो गया. Principal into 1 plus 5i. PP cancel हो जाता है. बचता है 2 is equal to 1 plus 5i. 1 is equal to 5i. I is equal to 1 by 5, which is 1 divided by 5, which is 0.2. And 0.2 is nothing else but 20% रेट के हिसाब से. बट अगर आपको यही क्वेश्चन, हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला किया था, एंड द शॉर्टकट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ इयर्स इफ P becomes x times in n and r, number of years is number of times minus 1 upon r into 100. So number of years is 5, डबल हो रहा है पैसा, upon the rate into 100, cross multiply, rate is 2 minus 1 is 1, upon 5 into 100, the rate is 20%. So 20% is the should be the answer. Moving on to 6. This is a question straight up from a material and straight up from the previous paper. एक बार पहले पूछ भी चुके हैं ये same question. We had 3 raised to x is 1 upon 243. Can I say 3 raised to x is 1 upon 243? 3 की कौन सी पावर है? 2, 3, 4, 5, fifth power है. So that's 3 raised to 5. In the next step, 3 raised to x is 3 raised to minus 5, implies that x has to be equal to minus 5. So the answer to this should be C, minus 5. Moving on to the next, which is question number 7. Question number 7 is a rather interesting question. It's a mix of indices plus ratios. So question बोलता है that 10 raised to x should be equal to 1000 raised to y, should be equal to 100 raised to y, should be equal to 1000 raised to z, and they want you to do an x is to y is to z. तीनों का रेशियो चाहिए. अब तीनों के रेशियो के लिए स्टेप 1, तीनों में कोई रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी. आपको बेसिस में रिलेशनशिप दी है एंड पावर्स की रिलेशनशिप पूछी है, तो मैं तो पहले बोल दूंगा 10 raised to x is 10 raised to x, 10 square raised to y, 10 cube raised to z, 10 raised to x,
is 10 raised to 2y is 10 raised to 3z. Done. Now after doing this, we will say bases are equal, which means powers have to be equal, which means that I will say x is equal to 2y is equal to 3z. अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स गलत आंसर मार्क कर देते हैं, बोलते बी इज द आंसर, बट यू हैव टू मूव अहेड एंड से अगर मुझे इन तीनों में रेशियो चाहिए तो मुझे इन तीनों की रिलेशनशिप में वैल्यूज चाहिए. तो आई एम गोइंग टू से लेट लेट व्हाट, ये जो x है ना, जो 2y है, जो 3z है, लेट इट बी इक्वल टू k. तो x k बन जाता है, 2y भी k बन जाता है एंड 3z भी k बन जाता है. तो x तो k है ही, y k/2 हो जाता है एंड z k/3 हो जाता है. एक बार वो हो जाए, देन वी से यू वांट अ रेशियो बिटवीन x y एंड z. द रेशियो बिटवीन x y एंड z इज x इज k, y इज k/2 एंड z इज k/3. अब मुझे इस रेशियो को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा. पहली बात तो k तीनों में कॉमन है तो वो हटा दो, बचता क्या है, 1:2 इज टू 1/3. ग्रेट, पर मुझे वैसा चाहिए ही नहीं. आई डोंट वांट इट इन फ्रैक्शंस, आई वांट इट इन प्रॉपर नंबर्स. ठीक है, फिर एक एक नंबर हटाना पड़ेगा. तो रिमेंबर हाउ, अगर रेशियो में 2 कॉमन है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3 कॉमन है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं. वैसे ही अगर मुझे कोई भी ऑपरेशन करना है ना, तो मैं तीनों को करूँ तो ही अलाउड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2:4:10 को रिड्यूस करना है तो हम पूरे रेशियो को 2 से डिवाइड कर देते हैं. अगर डिवीजन पॉसिबल है तो मल्टीप्लीकेशन भी है. अगर मुझे ये 2 हटाना है ना, तो मुझे सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 बन जाएगा, ये 2/2 बन जाएगा और ये 2/3 बन जाएगा. अब 2/2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा. सो दैट विल बिकम 2:1:2/3. अब ये 3 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 3 से. व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये बन जाता है 6/3 जो कैंसिल हो जाता है और ये भी 2 हो जाता है. सो व्हाट इज लेफ्ट फ्रॉम इट इज 6:3:2. Is that an option? Yes, a very good question. Now, another very simple way of going about this question would be, अगर आप straight up 6, 3 और 2 substitute कर देते हो ना, तो ये इक्वल होगा. देखो x, y एंड z की वो वैल्यूज होनी चाहिए जो इसमें डालने के बाद वो इक्वल हो जाए. एंड 6, 3 एंड 2 आर दी ओनली 3 वैल्यूज जो डालने के बाद ये इक्वल हो जाता है. 10⁻⁶, 100³ is also 10⁻⁶, and 1000 square is also 10⁻⁶. So that was like the one very basic and a very easy way of going about the question. Quickly moving on to question number 8. Log of 144 is equal to. अब log of 144 क्या है? Well, it could be equal to anything. But अगर आप ये देखो तो उन्होंने उसको तोड़ा है into the smallest elements 2 and 3. तो माई सजेशन टू यू वुड बी, इसके पहले कि आप ये आंसर सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, 144 को फैक्टराइज कर दो. 144 को फैक्टराइज कर दोगे तो 2 7 जा 2 2 जा, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा and 3 1 जा. This is the breakdown. What is the breakdown? 144 is nothing else but 2 raised to 4 and 3 raised to 2. 2 का 4th पावर एंड 3 का 2nd पावर. तो वी विल से log of 144 is the same as log of 2 raised to 4 and 3 square, which is log of a into b. मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग्स ऐड होंगे, log a plus log b, which is 4 log 2 plus 2 log 3. That should be your answer. So according to me, the answer should be 4 log 2 and 2 log 3. The answer should be C. Now a lot of students asked me saying कि सर इसका कैलकुलेटर में निकाल के वेरीफाई कर लेते तो चलता क्या? वो भी चल जाता, आप मेमोरी यूज करके वैल्यू निकाल लेते. तो मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन का दिखा रहा हूं आपको. अगर 144 का लॉग निकालते, क्योंकि बेस नहीं लिखा है तो बेस 10 होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 divided by 0.000070271. ये आता है log 144, 2.15847. तो ये लिख देते हैं, log of 144 is 2.15847.
अब आपको चेक करना ये वेरीफाई होता है नहीं होता, तो आपको कैलकुलेटर की मेमोरी यूज करनी पड़ेगी। तो मेमोरी क्लीन कर देना। पहले तो लॉग 2 निकालेंगे, 2 का लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइडेड बाय 0.00007027 1। ये आ गया 2 का लॉग, बट उसको 4 टाइम्स करना है तो इंटू 4, और उसको मेमोरी में ऐड करना है m प्लस, ये आ जाता है 2 log 3 पे 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइडेड बाय 0.00007027 1। इसको डबल करना है एंड देन ऐड दैट टू मेमोरी। मेमोरी रिकॉल करने के बाद यू शुड गेट द सेम आंसर 2.158 and so on. Yes, and that is why the answer is going to be C. Swiftly moving on to क्वेश्चन नंबर 9, अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग ना डायरेक्टली बोल देते हैं जीरो है तो आंसर ए है, जीरो है, विच इज रॉन्ग, दैट इज नॉट द आंसर। जीरो फैक्टोरियल, अगर ये जीरो होता तो आंसर जीरो होता, बट जीरो फैक्टोरियल है, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। 2 factorial plus 3 factorial into 0 factorial. 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 0 factorial is 1, 2 plus 6 is 8 into 1 is 8. A very basic and a very simple question. The answer for this, according to me, should be D. Quickly moving on to question number 10. How many ways 5 members can be selected from a committee out of 11 members of a club where a particular member will always exists in the committee? A particular member will always exist. In how many ways 5 members can be selected out of 11? 11 में से आपको 5 मेंबर चाहिए, बट बोल रहे हैं ये है कि अ पर्टिकुलर मेंबर विल ऑलवेज एग्जिस्ट, तो एक बंदा है जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है, बचे 10 अदर्स, सो कैन आई से 1 स्पेशल 10 अदर्स, टोटल में से आपको चाहिए सिर्फ 5। तो अगर टोटल में से आपको सिर्फ 5 चाहिए एंड यू आर सेइंग दैट 1 पर्टिकुलर मेंबर विल ऑलवेज एग्जिस्ट, तो ये बंदा हमेशा होगा ही, बचे हुए 4 यहां से आएंगे तो ही 5 होंगे। तो 1C1 में स्पेशल बंदे को सिलेक्ट कर लो, 10C4 में बचे हुए, विच इज नथिंग एल्स बट 1C1 इज 1 एंड 10C4 इज, 10 को 4 बार उतारना है, 10987 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, विच इज 10987। आप ये कैलकुलेटर में कर सकते हो। 4 3 2 1, तो बचता क्या है? बचता है 4 2 8 3 3 9, that's 7 3 21 into 10 is 210. So according to me, the answer to this question should be A, 210. Quickly moving on to the next question, and that is the number of proper subsets of AEIOU. To be very honest, AEIOU क्या है इससे हमें लेना देना नहीं है। अगर मैं इस सेट को ए नाम दे दूं जिसमें ए है, ई है, आई है, ओ है एंड यू है, तो इट हैज 5 एलिमेंट्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स is going to be 2 raised to 5, which is 2 raised to n, which is 2 raised to 5, which is 32. बट उन्होंने प्रॉपर सबसेट्स मांगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर मतलब क्या? प्रॉपर मतलब सब पार्ट होना चाहिए, यू कांट हैव द एंटायर सेट, पूरा सेट होके नहीं चलेगा, सब सेट होना चाहिए। एक सेट होता है ना इन 32 में जो लिटरली पूरा सेट होता है, वो उनको नहीं चाहिए। तो कहना से 2 raised to n -1 हो जाएगा, तो 2 raised to 5 -1, which is 32, -1, which is 31. The answer to this should be B, according to me। 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड नॉन एम्प्टी सबसेट, एंड लास्ट इज प्रॉपर नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी में भी 32 -1 हो जाता है, प्रॉपर नॉन एम्प्टी में 32 -2 हो जाता है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। क्विकली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। y दिया है और बोला है x की वैल्यू फाइंड करनी है जब dy बाई dx 0 है। अब y की वैल्यू दे दी है मुझे, x³ - 3x
if I say that I'm differentiating with respect to x, the derivative with respect to x of y is the derivative with respect to x of x cube minus 3x. dy by dx is 3x square minus 3. अब dy by dx को 0 लेना है, तो for dy by dx is 0, I'm going to say 3x square minus 3 is 0. Can I say 3x square is 3? Can I say x square is 1? And if x square is 1, x is plus or minus 1. क्योंकि आप रूट ले रहे हो. So the answer to this according to me should be A, and that is plus or minus 1. That is question number 12. Question number 13. Question number 13 is saying, okay, 9 PR is 504. Now, honestly, आप directly option evaluate कर दोगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा. But what if you want to actually solve it? इसका शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते क्योंकि r की वैल्यू पता नहीं है. तो all you will have to say is NPR is n factorial upon n minus r factorial is 504. If we cross multiply, 9 factorial upon 504 is 9 minus r factorial. अब 9 factorial को 504 से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर मैं, सॉरी माय कैलकुलेटर क्लोज डाउन, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करता हूं तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Divide that by 504 is going to be 720. So can I say 720 is 9 minus r factorial, or 9 minus r factorial is 720. Now, अगर राइट वाला किसी का फैक्टोरियल तो लेफ्ट वाला भी किसी का फैक्टोरियल होना ही चाहिए. 720 किसका फैक्टोरियल है? 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 4, और 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120 एंड 6 का 720. तो कहना चाहिए 6 फैक्टोरियल हो जाता है. तो 9 minus r factorial is 6 factorial, which means 9 minus r is 6, which means 9 minus 6 is r, which means r is 3. So the answer to this is B, 3. या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शन इवैल्यूएट कर सकते हो, which is always a choice. Moving on to question number 14. The present value of an annuity of 1000 received annually for 4 years. मैंने बोला था एक डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. प्रेजेंट वैल्यू पूछा है बट एन्युइटी का. आपकी पीरियोडिक पेमेंट है 1000 रुपए की फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एट अ रेट ऑफ 5%. तो इंटरेस्ट की बात करो तो 0.05 हो जाता है. The present value of an annuity is periodic payment divided by I into 1 minus 1 plus I raised to minus n. So this will become 1000. Interest is 0.05 into 1 minus 1 plus 0.05 raised to minus 4. So this will become 1000 divided by 0.05, 1 minus 1.05 raised to minus 4. So 1.05 raised to 4, 2, 3, 4. Reciprocal minus 1, sign change कर देना, into 1000 divided by 0.05, and the answer is 3545.95. So it's 3545.95. So 3545. D is the closest that we have. So can I say the present value has to be D, 3545. Quickly moving on to question number 15. The roots of the quadratic equation are 2n minus 3. The equation is, ये दिखाया था मैंने आपको. रूट मतलब x या तो 2 वैल्यू ले सकता है या x minus 3 ले सकता है. मतलब x minus 2 0 है या x plus 3 0 है. अगर दो जीरो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो x minus 2 into x plus 3 0 हो जाता है. अगर x minus 2 या x plus 3 0 हो जाता है, then your quadratic equation should look like
I think B should be the answer. X minus 2 into X plus 3. Question number 16. The cost function of perfect competition is given by where X denotes the level of output. The market price of the product is 17. Then the profit maximizing output is. आपको क्या क्या दिया है? आपको cost function दिया है, which is x square plus 5x plus 5. Then there is a price given to you, which is 17. आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने बोला है. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन होना चाहिए, एंड प्रॉफिट के लिए मेरे पास रेवेन्यू एंड कॉस्ट होना चाहिए. कॉस्ट है, मेरे पास रेवेन्यू नहीं है. रेवेन्यू इज प्राइस इनटू द क्वांटिटी, सो रेवेन्यू इज 17x. रेवेन्यू आ गया. आई एम गोइंग टू से प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. प्रॉफिट इज 17x minus the cost, which is x square plus 5x plus 5, which is 17x minus x square minus 5x minus 5, which is negative x square. Positive 12x minus 5. ये हुआ प्रॉफिट. अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो वी आर गोइंग टू से डिफरेंशिएटिंग द प्रॉफिट with respect to x. So the derivative with respect to x of the profit is the derivative with respect to x of negative x square plus 12x minus 5. The derivative of profit is, derivative of x square is a negative 2x plus 12. अगर मुझे प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम है ये पता करना है, तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 लेना पड़ेगा. मतलब 2x plus 12 को 0 लेना पड़ेगा. मतलब 12 is 2x हो जाएगा. मतलब x is equal to 6 हो जाएगा. At 6 the profit is either maximum or minimum. Now to be very honest, 6 मार्क करके you can move on, क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है नहीं, एक ही पॉइंट है, तो वहीं पे वो मैक्सिमम होगा. नन ऑफ दीज वगैरह होता तो बात अलग होती, बट वी विल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कंटिन्यू, and we will say I am differentiating the first order derivative of the profit with respect to x. I'm going to say derivative with respect to x of the first order derivative of profit is derivative with respect to x of minus 2x plus 12. Derivative of profit is the second order derivative, which is minus 2 at x is equal to 6. Second order derivative is still minus 2. So I'm going to say since the second order derivative is less than 0 at x is equal to 6, I'm going to say pi is maximum at x equals 6. So the profit maximizing output is going to be D, 6 units. Quickly moving on to question number 17. A very interesting question that is asked in logarithms. It depends on you how you want to go about the question. I'm just directly going to apply log rule. This is log a minus log b plus log c. अब how do you bring logarithms together? जो चीजें ऐड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो डिवाइड होती हैं. तो बेसिकली when you bring this together, which is log of 75 upon 16 minus the log of 25 upon 81 plus the log of 32 upon 243 is log a minus log b plus log c. तो this will become log of जो चीजें पॉजिटिव हैं वो न्यूमरेटर में चली जाती हैं, एंड जो चीजें नेगेटिव हैं वो डिनोमिनेटर में. तो बेसिकली ये log 75/16 पॉजिटिव है, तो 75/16 न्यूमरेटर में, ये 32/243 पॉजिटिव है, देन 32/243 न्यूमरेटर में, एंड ये जो बचा, क्या बचा, log of 25/81 नेगेटिव है, तो वो डिनोमिनेटर में. तो अब बचता क्या है, 16 1 जा 16 2 जा. अब 75 एंड 243 जाएगा, दोनों 3 में जाते हैं. सो दैट्स गोइंग टू बी 3 2 जा 6 3 5 जा 15. दिस इज गोइंग टू बी 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा. बाकी कुछ जाएगा नहीं. अब डिनोमिनेटर में वैसे भी कुछ नहीं जाता, तो वी विल लीव इट एज log of 25 into 2 is 50 upon 81 divided by 25 upon 81, which in turn is nothing else but 81 81 cancel हो जाता है, बचता है the log of
50 upon 25, which is nothing else but 25 twos are, which is nothing else but the log of. So, and very honestly, there will be multiple ways of how you want to do the question. This is just one of the ways that I've shown you. Another way of going about the same question is कैलकुलेटर में खत्म कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर दो एंड चेक कर लो किसके साथ वैल्यू टैली होती है. इसकी वैल्यू 0.3010 आएगी जो log 2 के साथ टैली होती है. तो आप ये कैलकुलेटर में फाइंड करके you can then cross verify also. That is also another way of going about it. किसी किसी ने इनको पावर्स दे के सॉल्व किया होगा, जैसे कि ये 2 की पावर है, ये 5 की पावर है, ये 2 की पावर है, ये 3 की पावर है, ये 3 की पावर है, और ये 3 एंड 5 की पावर है कंबाइंड. तो यू राइट इट दैट वे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. x varies inversely with the sum of y and z. So very good question. x varies, but कैसे? Inversely with the sum of y and z. तो y प्लस जी हो जाता है, y प्लस जी के साथ वेरी करता है ये. तो कहना है इसे x इज इक्वल टू k अपॉन y प्लस z. होल्ड ऑन टू दैट. x is 4, y is 5, z is 3. x is 4, y is 5, z is 3. 4 is equal to k upon 5 plus 3. 4 is equal to k upon 8. Cross multiply. 8 4s is 32. 32 is k, or k is equal to 32. And if k is 32, I have my equation. X is 32 upon y plus z. What do you want? When the value of z when y is 3 and x is 8. Value of z when y is 3, x is 8. So quickly substituting. 8 is equal to 32 upon 3 plus z. Cross multiply. 8 into 3 plus z is 32. 8 3s is 24 plus 8z is 32. 8z is 24 goes to the other side. So that's 32 minus 24 is 8. If 8z is 8, z is equal to 8 by 8, which is 1. The answer to this is going to be A, 1. 1 होना चाहिए इसका आंसर. Quickly moving on to question number 19, a very interesting functions question. f of x एक function है, which is ax plus b. अब उन्होंने बोला है कि f of -1 3 है. What does that mean? मतलब x में अगर -1 डालते हो तो उसका आंसर 3 हो जाता है. मतलब f of -1 तो होगा a into -1 plus b, but f of -1 तो 3 है. 3 is minus a plus b, or in other words, minus a plus b is 3. इसे equation number 1 लिख दो. Let's come to the second. f of 1 is 5. तो f में -1 डालो तो 3 आता है, 1 डालो तो 5 आता है. तो can I say f of 1 is a into 1 plus b, but f of 1 तो 5 है. 5 is a plus b. a plus b is 5. This is equation number 2. I know that a plus b is 5 is my equation number 2. I know that minus a plus b is 3. This is equation number 1. When I solve them, और मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि a की ऑलरेडी साइंस ऑपोजिट हैं, तो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा. Can I say 2b is 8? So b has to be 4. And if b is 4, a plus b has to be 5. A plus 4 has to be 5. Then can I say is a has to be 1. a 1 है, b 4 है, तो मेरा फंक्शन क्या हुआ? The function f of x is 1. So 1x or x plus b, which is 4. So x plus 4. You want the value of f of 2, which is 2 plus 4, which is 6. So the answer to that is C, 6. Moving on to question number 30. Sorry, ये मैंने किसी स्टूडेंट को भेज दिया था, तो ये ऑलरेडी था. Let me get rid of that. What does the question say? A bike rider and a cycle rider travel from city A to B. तो एक बाइक राइडर है और एक साइकिल राइडर है. They travel from A to B. You know what this is hint for? This is hint for the fact that
दोनों भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। मतलब अगर बाइक राइडर 300 किलोमीटर चल रहा है तो साइकिल भी 300, बाइक राइडर 10 तो साइकिल भी 10। और इन अदर वर्ड्स, अगर बाइक राइडर डी डिस्टेंस कवर करता है तो साइकिल राइडर भी डी डिस्टेंस कवर करता है। ये हुआ बाइक, ये हुआ साइकिल। करेक्ट। The time taken by the cycle rider is double the time taken by the bike. अब cycle rider is double then taken by the bike. तो let's say बाइक वाले ने 10 घंटे लिए तो बाइक को 20 लगे। बाइक वाले ने 6 घंटे लिए तो साइकिल को 12 लगे। तो अगर बाइक ने टी लिए तो साइकिल तो T2 लगे। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। अब वेलोसिटी का मतलब क्या है? नथिंग। वेलोसिटी इज अनदर वे ऑफ कॉलिंग स्पीड। स्पीड में हम साइंस में स्पीड को स्पीड नहीं बुलाते, वेलोसिटी बुलाते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो रेशियो मांग रहे हैं वेलोसिटीज का, मतलब स्पीड्स का रेशियो मांग रहे हैं। किसका? ऑफ द बाइक एंड द साइकिल। बाइक एंड साइकिल। तो पहले तो स्पीड्स की बात करते हैं। स्पीड ऑफ द बाइक, एस बी बुलाते हैं इसको। स्पीड ऑफ द बाइक इज डिस्टेंस ऑफ द बाइक अपॉन टाइम। हो गया? ग्रेट। स्पीड ऑफ द साइकिल इज द डिस्टेंस अपॉन ऑफ द साइकिल अपॉन टाइम। दोनों का हो गया। Let's start taking a ratio. The ratio is the speed of the bike to the speed of the cycle is d to t is to d2 to t. अब रेशियो इज नथिंग एल्स बट डिवीजन, तो हम डिवीजन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में बाय टेकिंग अ रेसिप्रोकल। टी कैंसल्स, डी डी कैंसल्स, बचता क्या है? 2। अब 2 नहीं है मतलब 2/1 है। अब 2/1 है मतलब 2:1 है। So the answer for this question according to me should be B, 2:1. That is question number 20. And this is where mathematics comes to an end. Very honestly, if you ask me, apart from that one ratio question, if you say, and one logarithms, I don't see any challenge in this paper. But to each his own, we very quickly entered statistics. The pie diagram used for the representation of source ABCD revenue. The central angle corresponding to the source C. C का central angle पूछा है, तो C के central angle के लिए मुझे चाहिए value of C divided by total value is equal to angle of C divided by total angle. अब total angle कितना होता है? 360। अब C की वैल्यू क्या है? 240 डिवाइडेड बाय मुझे चाहिए टोटल, तो टोटल ले लो। टोटल इज 120 प्लस 180 प्लस 240 प्लस 180 इज अ टोटल ऑफ 720। 720 होता है। So out of 720 is the angle of C. So I'm just writing it as angle, or you can also say theta upon 360. Cross multiply 240 into 360 upon 720 is theta. What is theta? Theta is 240 into 360 divided by 720, and that's 120 degrees. 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। The answer is going to be B. Question number 22. Which part of a statistical table contains the observed values? तो मैंने आपको बोला था ये जो रो एंड कॉलम मिलके भरते हैं is the data that we use, the observed values, and that is nothing else but what we call the body of the table. Question number 23. The frequency density of the class interval 11 to 15. अब there is a chance कि students ने ये गलत मार्क किया होगा if they've not understood one thing well. मैंने आपको बताया था कि let's talk about frequency density. Frequency density is nothing else but the class frequency upon the class width. अब प्रॉब्लम ये है कि क्लास विद कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने क्लास विद 11 to 15 which is 15 minus 11 4 लिख दी है तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस क्लासेस है, आपको इनको पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो 11 विल बी 10.5 एंड 15 विल बी 15.5। तो अगर विद की बात करो तो इसकी क्लास विद 5 है, 4 नहीं। सो इट इज गोइंग टू बी 5/5 एंड 5/5 द आंसर इज गोइंग टू बी 1। सो द आंसर इज गोइंग टू बी C, 1।
अगर आपने 4 ले लिया है गलती से उसको, तो आंसर 1.25 लिखा होगा, विच अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग. The measure of central tendency based on all observations. Mean is based on all observations. Median सब observations पे depend नहीं करता. Mode भी सब observations पे depend नहीं करता. Variance is not a measure of central tendency. Then that is completely out of question. Mathematical averages, AM, GM, HM are basically formulas जिसको पूरा data चाहिए, and because उसको पूरा data चाहिए, it is that data value that depends on all the observations. That's 24. 25, a very simple question. The geometric mean of the numbers 4, 6 and 9. तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर का geometric mean तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4, 6, 9, और फिर उसका क्यूब रूट ले लो. 4, 6 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 6 इंटू 9 इज अ टोटल ऑफ 216. अब क्यूब्स करना चालू कर दोगे या फिर इसी का क्यूब रूट ले लोगे तो भी आ जाएगा. अब क्यूब रूट कैसे लूं? यू आर गोइंग टू से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 -1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6.00058. So can I say the answer is 6? This is one way of going about it. या फिर you can factorize 4 2 into 2 है, 6 3 into 2 है, and 9 3 into 3 है. तो you get a 2 cube and a 3 cube. 2 cube का cube root 2, 3 cube का cube root 3. The answer is 3 into 2, which is 6. 6 का cube 216 होता है. So the answer to this is 6. We are halfway through the paper. Quickly moving on to question number 26. The mode of the frequency distribution. This is a no-brainer. Mode is that data value which is seen maximum number of times. सबसे ज्यादा frequency 10 की है, then the mode of the distribution is the data value 10. Correct? Quickly moving on to question number 27. Find the geometric mean of 1/4, 1/8, 1/16. Now, to be very honest, now this is also a no-brainer. Why? क्योंकि ये प्रॉपर जीपी है. 1/4 को आधा कर देते हो तो 1/8 हो जाता है, 1/8 को आधा कर देते हो तो 1/16 हो जाता है. या फिर अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आगे की टर्म्स मिल जाएंगी. इन दैट केस ये जो मिडिल टर्म है ना, यही उसका ज्योमेट्रिक मीन है 1/8. बट अगर करना ही है तो आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए. ज्योमेट्रिक मीन इज गोइंग टू बी द क्यूब रूट ऑफ 1/4, 1/8 and 1/16, which is again the cube root of 4 into 8 into 16, 4 into 8 into 16, which is 1/512. अब 512 किसका क्यूब है? 512 is the perfect cube of 8. चेक कर लो, 8 into 512. So can I say the geometric mean is 1/8? Very straightforward. The answer is D. 28. Calculate the median of the following distribution. Median निकालना है. अब पहली बात तो डेटा इज गिवन टू यू एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्स. कंटिन्यूस है क्या? चेक कर लो. हाँ है. क्या ग्रुप्स है? 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35 एंड 35 से 42. दिस इज गोइंग टू बी माई क्लास. एंड द कैच हियर इज उन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है. तो हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट्स गोइंग टू बी आवर टास्क. सो स्टेप 1 इज पहले तो क्यूम्युलेटिव को रेगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो. 7 जैसे का वैसा, सब्ट्रैक्ट 11, सब्ट्रैक्ट, दैट्स 42 minus 18, which is 24, subtract, this is 61 minus 42, which is 19. Then there is 73 minus 61, which is 12, and 82 minus 73, which is 9. Correct? Obviously, total 82 हो जानी चाहिए. That's 7 plus 11 plus 24 plus 19 plus 12 plus 9 is a total of 82. आपको मीडियन चाहिए.
मीडियन के लिए पहले m निकालना पड़ेगा, तो m इज n/2, 82/2, which is going to be 41. 41st फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे क्यूमुलेट करना पड़ेगा, जो क्यूमुलेट ऑलरेडी करके दिया उन्होंने, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आता है 41, तो ये हो गया आपका क्वार्टाइल क्लास। तो अगर ये आपका क्वार्टाइल क्लास हो गया है, तो ये है आपका L1, ये है आपका L2, ये है आपका M, ये है आपका F, और ये है आपका CF। So when I put it into the median formula, the median is going to be L1 plus L2 minus L1 into N minus CF, the whole divided by F, which is L1 14 plus L2 minus L1 into M, which is 41, minus CF, which is 18, the whole divided by F, and that is 24. 14 plus, that's 21, minus 14, and that is, sorry, 21 minus 14, and that's 7, into 41 minus 18, which is 23, the whole divided by 24, which is 7 into 23 divided by 24 is 14 plus 6.708333. That's going to be 20.708333. Should be your median. Let's very quickly check if that is an option. So they've made it 20.71. So according to me, B should be your answer, which is 20.71. And that's 28, 29. For an ungrouped data set, ये बोला था आएगा। सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने हर एक अटेम्प्ट पूछा है। डेटा दे के दे विल आस्क यू द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए पहले मीन चाहिए, तो आई एम गोइंग टू से x बार इज सम ऑफ ऑल x's डिवाइडेड बाय n. x bar is 480 divided by 15. X bar is 480 divided by 15, which is 32. So I'm going to say standard deviation of x is the square root of sum of x square upon n minus x bar square, which is the square root of 15735 divided by n, which is 15, minus x bar, which is 32 ka square. So I'm going to say it is the square root of 15735 divided by 15, which is 1049. 32 ka square, I think should be 1024, correct? 1024 minus 1049 is 25, which is 5. They've asked for the, देख लेना 5 and 25 दोनों ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आंसर डी होगा. The answer is going to be 5. That is question number 29. 30. The AM and CV of a variable x is 5 and 20. Then the variance of x is. So we know that the coefficient of variation is the standard deviation upon the mean into 100. The coefficient of variation is 20%. Is the 20 लिख दो is the standard deviation जो नहीं दिया है, and the arithmetic mean, which is 5 into 100, cross multiply is 20 into 5 upon 100 is the standard deviation of x. Can I say standard deviation of x is 1? And if the standard deviation is 1, the variance is the square of that 1, which is going to be anyway 1. The answer to this should be C. The mean deviation about 4, not any other number, not the mean, the median or the mode, about 4. तो कोई बात नहीं, 4 के इर्द गिर्द कितना डिविएशन है ये बताना उनको. तो 0, 9, 5 and 6 का 4 के इर्द गिर्द कितना डिविएशन है, तो इट इज 0 minus 4, minus 4, 9 minus 4, 5, 5 minus 4 is 1, and lastly 6 minus 4 is 2. Take an absolute value of it, so that's 4, that's 5,
that's going to be 1, and this is going to be 2. The total deviation is going to be 6 and 6, 12, 12. So can I say mean deviation about 4 is going to be the sum of the absolute deviations divided by n. That's 12 by 4, and 12 by 4 is 3. The answer to this is going to be B, and that is equal to 3. That is question number 31. Quickly moving on to 32. The relationship between two variables is represented by a scatter plot. एक scatter plot हमें मदद करता है to understand how they are related to each other, which is where correlation comes into picture. Question number 33. जहां जहां x लिखा है वो x minus x bar है, y लिखा है वो y minus y bar है. तो अगर मैंने आपको sum of x square दिया है तो वो sum of x square नहीं है, वो sum of x minus x bar square है 90. sum of x y नहीं दिया है, वो sum of x minus x bar है and y minus y bar है which is 60. sum of y square नहीं है, y minus y bar square है which is 62.5. उन्होंने आपको r की वैल्यू फाइंड की है. अब इफ यू नोटिस उन्होंने कहीं भी n नहीं दिया. तो रिमेंबर देयर वाज दैट वन फॉर्मूला ऑफ r दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड दैट इज r इज, ऊपर हम कोवेरिएंस लिखते हैं बट बिना n का, which is sum of x minus x bar into y minus y bar divided by नीचे deviations but बिना n के, which is sum of x minus x bar square into the root of sum of y minus y bar square. क्योंकि ये वाला formula is independent of what the values of n are. So this is going to be 60 divided by the root of 90 into the root of 62.5. अब independently 90 and 62.5 perfect squares नहीं है, क्या भरोसा मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाए. 90 into 62.5 is 5625 का रूट ले लूं तो परफेक्ट 75 आ जाता है. तो R is 60 divided by 75 and the answer there is 0.8. So the answer there is B, 0.8. 33, 34. State which of the following is false. गलत क्या है? Correlation coefficient is the geometric mean of the regression coefficient. सही है ये. This is not wrong. It is the geometric mean of the correlation coefficients, of the regression coefficient. Sorry. Correlation coefficient is independent of shift of origin and change of scale. Perfect. Shift of origin and change of scale से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. If the variables are connected by a perfect linear relationship, which means the correlation coefficient is either -1 or +1, perfect. तीनों भी सही है. तो ये गलत होना चाहिए. Correlation coefficient depends on units of measurement of the variable. It does not. This is what is false. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से फर्क नहीं पड़ता. अगर आपने किसी स्टूडेंट्स के वेट और हाइट का कोरिलेशन निकाला है, पर तब आपने वेट्स किलो में लिया था और अब आप वेट को ग्राम में चेंज कर दो और वापस कोरिलेशन फाइंड करो, सेम आएगा, चेंज नहीं होगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 35. इन अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन, 2 जजेस आर गिवन the following ranks to the competitors. What is the correlation coefficient? 1 1 2 2 4 3. ये थोड़ा चेंज हो गया, नहीं तो परफेक्ट 1 हो जाता. तो कोई बात नहीं. रैंक ऑफ जज 1 एंड रैंक ऑफ जज 2, 1 2 3 4 and 1 2 4 3. What is the difference between the rank? 0 0 -1 and 1. What is the square of the differences? 0 0 1 and 1. What is the total of the square of the differences? Is 2. So the rank correlation coefficient is 1 minus 6 sum of d square upon n into n square minus 1. The rank is 1 minus 6 into 2 upon 4 into 4 square minus 1. So the rank is 1 minus 6 into 2 upon 4 into 4 square is 16 into 1 is 15. Let's continue. Cancelling whatever does. So this is going to be 2 1s are 2 2s are, 2 1s are 2 3s are, 3 1s are 3 5s are. So the rank correlation is 1 minus 1 upon 5. So direct लिख दो तो 5 1s are 5, minus 1 is 4, 4 by 5 which is 0.8. According to me, the answer should be a positive correlation and a pretty strong positive correlation, which is a positive 0.8. X bar, Y bar, regression, correlation and standard deviations are given to you? No.
वेरिएंसेस आर गिवन टू यू, सिग्मा स्क्वायर दिया है आपको, द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x फाइंड करनी है। तो आपने मुझे x बार दिया है 10 है, आपने मुझे y बार दिया है विच इज 20, आपने मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है विच इज 0.6, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्क्वायर लिखा है विच इज 2.25। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, 225 का स्क्वायर रूट 15 है, सो दिस बिकम्स 1.5। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर 4 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 2 है। आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x चाहिए, तो आपके पास byx होना चाहिए। byx is r into sigma y upon sigma x, which is r, which is 0.6 into sigma y, which is 4 upon sigma x, which is 1.5, which is 0.6 into 4 divided by 1.5 is 1.6. ये 1.6 आ गया, we will then start putting into the formula. Sorry, correct है ना 1.6, क्योंकि यहाँ मुझे दिख नहीं रहा। dy by x is r into r is 0.6 into standard deviation of x y. अच्छा, this is where I made a mistake. ये 2 है standard deviation, sorry. So that's 0.6 into 2 divided by 1.5, which is 1. Perfect 1 आ जाता है ये, अब correct है? Yes. Now they want the line of regression of y on x. So the line of regression of y on x is y minus y bar is byx into x minus x bar. So that's going to be y minus y bar. Y bar क्या था? 20 is byx is 1 into x minus x bar. X bar क्या था? 10. So can I say y minus 20 is x minus 10? 20 goes to the other side and becomes positive. Subtract होगा, तो can I say x is x minus 10 plus 20? So y is x plus 10. Nope. Am I reading the data correctly? Yes. The correlation is 0.6, 10 and 20, 2.25. So 2.25 का root is 1.5. Perfect. Sigma square x and 4 का square root 2. Perfect है। कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? Byx is wrong, is it? Sorry. 0.6 into standard deviation of y, which is 2 upon standard deviation of x, which is अच्छा 1.2. अच्छा मेरी कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया, 0.8, सॉरी 0.8 आता है, तो ये 0.8 होगा। तो एक्चुअली 0.8 आता है ना, तो यू कैन डायरेक्टली से डी आंसर है, क्योंकि वहीं पे एक ये है। सॉरी मेरे कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया था। दिस इज गोइंग टू बी 0.8 x minus 8. Take the 20 to the other side, subtract होगा बट पॉजिटिव 12 हो जाएगा। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 0.8x plus minus 8 plus 20. So that's 0.8x plus 12. So the answer to that is D. Sorry about that. Quickly moving on to, thank you, 37. The regression coefficient of two variables is 0.4 and 0.9. अब regression coefficient, which is bxy, byx, कुछ भी हो सकता है, 0.4 and 0.9. आपसे कोरिलेशन मांगा है। नंबर 1, कौन क्या है हमें पता नहीं है, तो सीधा बोल देते हैं, r is plus minus root of bxy into byx. r is positive or negative root of 0.4 into 0.9. r is positive negative square root of 0.36. r is positive or negative root of 0.36 is positive or negative 0.6. अब दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही होगा ना, तो r is positive 0.6. The answer is A, positive 0.6. A pretty straightforward question, a very no-brainer question. Which of the following is true? R के बारे में पूछ रहे हैं, तो R always lies between -1 and +1 included.
कोरिलेशन पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, नेगेटिव 1 भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, ये हमने सुपरविजन में भी किया था, 0 and 1 इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 40, 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting exactly 2 heads, 3 coins, so sample space में 2 cube, 8 outcomes होंगे। what are the 8 outcomes? अगर मैं इसे सेट ए बुलाऊं तो the 8 outcomes are head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, head, head, tail, tail, head, head, tail, tail, then there is head, 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 tail, 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 correct? You want exactly, ये हुआ आपका sample space, you want exactly 2 heads, exactly 2 head यहाँ है, head head tail में, then head tail head में, and lastly tail head head में, exactly 2। तो अगर आपका sample space 8 है, A में उसमें से 3 रीडिंग्स हैं, then the probability के A होगा is 3 out of 8. So the answer according to me should be A, that is 3 out of 8. That is 40. Moving on to question number 41. If 2 dice are thrown, if a die is thrown 2 times successively, वही होता है, आप एक डाई को 2 बार थ्रो करो या फिर 2 डाइस को एक बार थ्रो करो, बोथ इज द सेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7? सम की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी हमने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. What is the frequencies? This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हमने भी डिस्कस किया था कि 7 सबसे ज्यादा बार दिखता है, करेक्ट? 7 सबसे ज्यादा बार मतलब 6 बार दिखता है, तो कैन आई से द आंसर इज 6 out of 36, which is 1 out of 6. So the answer to this should be B, 1 out of 6. Sorry. Question number 42. Two balls are drawn randomly from a bag containing 4 and 6 white balls. The probability that the balls drawn are white. तो पहली बात तो 4 white, 6 black ball, total of 10 balls. तो अगर सैंपल स्पेस की बात करो तो 10 में से 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, तो 10 into 9 upon 2 into 1, that's 9 into 5. Hold on to that. क्योंकि डिनोमिनेटर में 45 कहीं नहीं दिख रहा तो ये भी कैंसिल होगा। What is the probability that you draw a white ball? 4 ही व्हाइट बॉल है, करेक्ट? तो अगर 4 व्हाइट बॉल है तो मेरे दोनों के दोनों बॉल व्हाइट होने चाहिए, which is 4 upon 3, 2 into 1, which is 2 into 3. What is the probability के A होगा? A होगा 2 into 3 out of 9 into 5 times, which is going to be 3 ones are 3, 3s are 9. Can I say the answer is 2 out of 15? A should be the answer, 2 out of 15. That's 42. 43. The probability of occurrence of at least one, कम से कम एक, कम से कम एक मतलब A या फिर B, दोनों में से एक, and A या फिर B is nothing else but A or B, and A or B is nothing else but A plus B. B should be the answer, probability of A plus B. A card is drawn randomly from a pack of 52 cards. The probability that the card is either a red or a king, red चलेगा या king चलेगा? A very good question. A card is drawn, तो अगर सैंपल स्पेस की बात करो तो 52 में से एक कार्ड, which is 52 choices. Find the probability that the card is either red or a king. रेड चलेगा या फिर किंग चलेगा? अब देखो, अगर रेड बोलोगे तो 26 कार्ड होते हैं, बट इसमें 2 किंग इंक्लूडेड होते हैं, रेड वाले। अब किंग चलेगा तो सिर्फ 2 और किंग ही ऐड हो जाते हैं, which is it does not become 26 plus 4 30, it becomes 26 plus 2, क्योंकि 2 किंग तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 28 किंग हो जाते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट योर इवेंट हैपनिंग, 28 में से कोई भी एक कार्ड चाहिए आपको, which is 28C1. so the probability के A होगा is 28 out of 52. अब इसमें क्या क्या जाता है? 2 पहले तो
So 2 1s are 2, 4s are, this is going to be 2 26s are, 2 7s are, and 2 13s are. The answer is 7 out of every 13, which should be D, according to me, should be the answer. Question number 45. A दिया है, B दिया है, यूनियन दिया है, एंड बी नोइंग ए पूछा है. अब बी नोइंग ए के लिए इंटरसेक्शन होना चाहिए, जो मैं यहां से निकाल सकता हूं. अब अगर आप सबको सेम डिनोमिनेटर लिखो तो थोड़ा इजी हो जाता है. 3 4 एंड 2 को अगर मैं तीनों को मिला के 12 बना दूं ना, तो ये इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए. तो इसको 4/12 लिख देता हूं. ए को 4 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3/12 लिख देता हूं. एंड यूनियन को 6 से मल्टीप्लाई करके 6/12 लिख देता हूं. हो गया. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद probability of A union B is probability of A plus probability of B minus the probability of A intersection B. So union is 6 out of 12, A is 4 out of 12, B is 3 out of 12 minus A intersection B. Intersection उधर, बाकी सब इधर. Probability of A intersection B is 4 out of 12 plus 3 out of 12 minus 6 out of 12. So that's going to be 4 plus 3 minus 6 out of 12. That's going to be 7 minus 6, which is 1 out of 12. Intersection आ गया. अब चाहिए आपको probability of B knowing that A has occurred, which is probability of A intersection B upon probability of A. अब A intersection B क्या आता है? 1/12 divided by A क्या आता है? 4/12. 12 cancel हो जाता है, which is 1 out of 4. Is going to be the answer. So the answer is going to be A, 1 out of 4. That is 45. 46. Find the index number of the year 2024, making 2023 as the base. तो ये हुआ आपका 2023 as the base, which is price in zero, and 2024, which is current. For the following data by the aggregative method. Aggregative method है तो totals को compare करना है, तो मैं ऐसे ही total ले लेता हूँ, which is 30 plus 40 plus 90 plus 90, which is 250, and this is 35 plus 50 plus 95 plus 110, which is 290. So when I say that's 290 by 250 into 100, 290 by 250 into 100 is 116, 16% increase in prices. So according to me, the answer to that should be 8. That's 46, 47. They've been given you all the sums. और मांगा क्या है, ठीक से पढ़ लेना. Then the last year's price index. Price index बोला है last year's. So अगर last year's price index बोलते हैं तो it is L01 is going to be number 1 is आपको क्या कंपेयर करना है, प्राइजेस कंपेयर करनी है. अच्छी बात है. तो इट इज प्राइस अगेंस्ट प्राइस, एंड ऑब्वियसली इट इज प्राइस इन द करंट अगेंस्ट द बेस. बट क्वांटिटी किसकी कंसिडर करोगे? लास्ट ईयर्स हैं तो क्वांटिटी बेस की कंसिडर की जाएगी. सो दैट्स Q0 इनकी टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. सो द लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर इज गोइंग टू बी P1 Q0. उन्होंने n के टर्म्स में लिखा है तो हमें PN Q0 चाहिए. PN Q0, which is 1900, upon P0 Q0, which is 1360 into 100, which is going to be 1900 divided by 1360, correct, into 100. 139.70. So can I say the answer to this is going to be B, 139.70. 48. The observed values of trend, season, variation, cyclic variation, and irregular movement over time series are denoted by YTSC and I. Then the multiplicative model is given by multiplicative model. बताया था मैंने आपको, सबको multiply कर दो becomes the multiplicative model.
Question number 49. The 3-year moving averages for 2012 and 2013 are 23 and 33. If the value for the year 2011 is 17, then what is the value for 2014? So very interesting question. To start with, 2012 से डेटा दिया है तो 2012, 2013, 2014 नहीं 2011 भी है तो 11, 12, 13 एंड 14. लेट्स गो बैक. द 3 yearly मूविंग एवरेज फॉर 2012 एंड 2013 दे दिया है. 2012 एंड 2013 का 3 yearly मूविंग एवरेज दिया है. तो अगर मुझे इसकी वैल्यूज नहीं पता ना, लेट्स कंसिडर दिस एज एबीसीडी. बोल देते हैं एबीसीडी है. करेक्ट. अगर उन्होंने द 3 yearly मूविंग एवरेज फॉर 2012 बोला है, मतलब इन तीनों का एवरेज बराबर इज 23 एंड 33. 12 का 23 एंड 13 का 33. अगर 12 का 23 है तो 23 इज a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई. 46 इज a प्लस b प्लस c. अगर 2013 का 33 है तो 33 is b plus c plus d upon 2. Cross multiply. 66 is b plus c plus d. Now what? Then the value for the year, if the value for 2011 is 17. अगर ये a 17 है तो अब a भी 17 है, ये पता चल गया. तो क्या ना इसे इसको हटा देता हूं यहां से. अगर ये 17 है तो 47 इज 46 is 17 plus b plus c. तो b plus c 46 minus 17 हो जाता है which is 29. बट यही b plus c यहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है. तो 66 is 29 plus d. तो 66 minus 29 is 37 is d. अब d क्या है? d is for the year 2024. So the answer is going to be d37. 1 minute. कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? Is there any value that I wrote wrongly? क्योंकि 37 cannot be determined है. None of these नहीं है ऑप्शन में. Let me repeat. 3 yearly moving average for 2012 and 2013 is 23 and 33. So 23 for 2012. तो 1, 2, 3 का average 23 and 2, 3 का average 33 बराबर. Cross multiply. 2 2s are 4, 3 2s are 6. 46 is a plus b plus c. But a plus b, oh, I'm so sorry. 3 yearly moving average. वही होगी मेरी गलती. I'm extremely sorry. सब change हो जाएगा. So this will be 3 2s are 6, 3 3s are 9. This is 69, 69, 69 minus 17 is 52. This is going to be 99. So this is 99. 99 minus 52. So that's 99 minus 52 is 47. Correct. So D is equal to 47. Sorry, मैंने divide by 2 कर दिया था. A is going to be the answer, 47. And the last question. Using the arithmetic mean of price relatives, compute the quantity index for the following data. Quantity दिया उन्होंने सिर्फ, बस प्राइस रिलेटिव से क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है. तो लिख लेते पहले Q0, Q1, 20, 30, 10, 25, 50, 40, 25, 30, 15, 35, 55, 45. तो आपको पहले तो प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, विच इज Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 is your price relative. So to do that, it is going to be 25 and memory को clean कर देता हूँ. 25 divided by 20 and multiplied by 100, 125 and add that to memory. Next 30 30 कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मेमोरी में डालना है वो. 200, add that to memory. Then that's 15.
divided by 10, multiply by 100, add that to memory. 35 divided by 25, multiply by 100 is 140, add that to memory. 55 divided by 50, multiply that by 100, add that to memory, 110. And lastly, 45 divided by 40, multiply that by 100, and add that to memory, which is 112.5. If I recall, I get 737.5. So the quantity index is equal to the quantity relatives QR ka total divided by, which is 737.5 divided by n, which is, I believe this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 data values. So divided by 6, which is going to be 122.91. Is that an option? Yes, 122.92, 122.91, 666, so 121.92. And that's it. These are the 50 questions for the December 25 paper.